एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, चैप्टर्स ऑन ईडीपी, चैप्टर 8 फ्रॉम गैलियन। तो एक एग्जाम्पल देखने से पहले हम क्लासीफाई करना चाहते हैं अप टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7। तो उसके पहले आइसोमॉर्फिज्म के बारे में एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 138 इन 8th एडिशन। इट सेज, शो करो कि आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, प्रूव दैट। क्वेश्चन सेज, प्रूव दैट the isomorphism, the relation isomorphism between two groups, any two groups, is an equivalence relation, is an equivalence relation. So that is, अगर G, H and K अगर तीन ग्रुप्स आपके पास दिए हैं, इफ G, H and K आर ग्रुप्स, then we have the following: prove that this reflexive relation is reflexive, that is G is isomorphic to G is isomorphic to itself. Asymmetric, okay, this is the property of reflexive of the relation. G is isomorphic to H implies H is isomorphic to G. Okay, this is, we call this relation as symmetric, इसको symmetric कहते हैं। फिर तीसरा है transitive, G isomorphic to H and H isomorphic to K implies G is isomorphic to K. This relation we call as transitive relation. तो the proof बहुत simple है, you can try yourself, but I will write the main steps. I thought मैं कुछ steps इसका लिख देता हूँ ताकि you can see. Okay, this is an important issue in classification of groups. जब भी हम लोग ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म हम कहते हैं। सो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। लेट अस सी हाउ इट इज़। कंसिडर द आइडेंटिटी मैप। ओके, कंसिडर द आइडेंटिटी मैप. Consider the identity map. Consider the identity map from G to G. I from G to G, which is clearly one-to-one, on-to, well-defined or operation preserving. So it is an on-to homomorphism, which is clearly an onto homomorphism, which is clearly an onto homomorphism, onto isomorphism. Okay, so therefore G is isomorphic to G itself. So पहला तो हो गया सिंपल। और दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सपोज G is isomorphic to H, तो इस केस में देयर एग्जिस्ट ए मैप। सो देन दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए मैप फाई रख लो फ्रॉम G to H, विच इज 1-to-1 onto is an onto isomorphism such that phi is an onto isomorphism. तो इसका जो इन्वर्स मैप वो भी एग्जिस्ट करेगा एज ए फंक्शन फाई इनवर्स। सो वो भी ऑन टू ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। सो दिस आई एम लीविंग द प्रूफ. It follows from the properties of isomorphism as stated in the book.
Okay, then phi inverse is well defined from H to G, is also an onto isomorphism, is also an onto isomorphism. Okay, therefore H is isomorphic to G. So सिमेट्रिक भी हो गया. अब देखते हैं ट्रांसिटिविटी. ओके, सपोज G is isomorphic to H and H is isomorphic to K. इसका मतलब है कि there exists isomorphism, there exists a map phi from G to H which is 1 to 1, on to and ऑपरेशन प्रिजर्विंग. और ऐसे एक और मैप मिलेगा साई एंड दैट एग्जिस्ट अनदर मैप साई फ्रॉम H to K. This will be also 1 to 1, on to and operation preserving. So composition map define कर लो. Okay, now the map psi composed with phi is defined from G to K, okay, given by the map value is given by psi phi at the point at the element G is psi of phi of G. It's true for every G belonging to G. Then clearly this is an onto isomorphism. मैं ये भी छोड़ रहा हूँ मैं. Okay, then clearly psi phi is an onto isomorphism. Okay, therefore G is isomorphic to K. So therefore the relation of the isomorphism relation between two groups is an equivalence relation, on the collection of groups, So अब चलते हैं classification problem. Okay, this is the example which it is discussed in the book. So it says that classification of groups of order at the most 7 up to isomorphism. Okay, this is what we will be doing it. इसी को हम देखते हैं. Okay, classification of groups of order up to isomorphism. So basically हम इसमें क्या शो करते हैं उसे लिखता हूँ पहले मैं. Let me write what we are going to show. We prove the following. Okay, we prove the following. G a group रख लो. Okay, let G be a group. तुम शो करेंगे कि अगर if order of G is equal to 1, then G is isomorphic to Z1. This is what will be. Is clear. Okay, there is nothing to show. If order of G, a G group दो एलिमेंट हैं, then G is isomorphic to Z2. Cyclic group है ये फिर. So if order of G is equal to 3, we will show that G is isomorphic to Z3. मतलब कोई भी group of order 3, it is cyclic, abelian भी होगा और it will be isomorphic to 3. If order of जब a group G contains 4 elements, इस case में then either G is isomorphic to, then in this case we will be showing that either G is isomorphic to Z4
or G is isomorphic to the external direct product of Z2 and Z2. Okay, so ये fourth part. तो fifth part, if order of G group, the group contains 5 elements, then G is isomorphic to Z5. और sixth, if order of G is equal to 6, तो इस केस में हम शो करेंगे either G is isomorphic to Z6 और G is isomorphic to D3 डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं. ओके, और S3. ओके, और S3 और अप टू 7 क्लासिफाई करने वाले हैं. सो इफ ग्रुप G contains 7 elements, then G is isomorphic to Z7. अब इसका प्रूफ आगे देखते हैं.